ओके, सो हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट। एंड ये स्टोरी बहुत पुरानी है, लाइक पिछले साल की दिसंबर की ये कहानी है। सो मुझे एक डीएम आता है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे डीएम्स पहले भी आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के। एक उतने भी ज़्यादा नहीं, बट एक दो मुझे डीएम्स आ चुके हैं। एंड उन एक दो डीएम्स का मेरा सेम रिप्लाई रहता था, सॉरी आई कांट वर्क नाउ। एंड मेन रीज़न वाज कि मेरे पास पेमेंट का इशू होता था। मेरे पास कोई अपना खुद का अकाउंट भी नहीं था उस टाइम पे, एंड अभी भी नहीं है, अभी भी वो प्रोसेस में है, लेकिन वो बन जाएगा जल्दी। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं सोचता था कि इंटरनेशनल पेमेंट्स टैक्स वगैरह कटेंगे, एंड जिनके अकाउंट में, यानी कि भैया के अकाउंट में जो पैसे मैं लेता था इंडियन क्लाइंट से, वो तो क्लियरली मैं ले लेता था, लेकिन जो वाइज वगैरह पेपल वगैरह है वो उनके पास भी नहीं था, भैया भी वो चीज़ यूज़ नहीं करते थे। सो दैट्स वाई मैं सभी क्लाइंट्स को मना कर देता था। बट अराउंड 2-3 दिसंबर के मैंने एक मैसेज देखा इंस्टाग्राम पे, एंड ही वाज लाइक प्रेशरिंग अप मी एंड ही वाज फोर्सिंग मी कि आपके थंबनेल्स बहुत अच्छे हैं, सो आई वांट यू ओनली टू मेक माय थंबनेल्स। सो आई आल्सो थॉट कि एक बार ट्राई करते हैं। सो उस टाइम मैं एक एजेंसी से जॉइंट था, उसमें लाइक मैंने ज़्यादा वर्क तो नहीं किया, एजेंसी नहीं था, एक न्यू बंदे ने स्टार्ट किया था, वो वीडियो एडिटिंग करता था एंड मुझसे कुछ थंबनेल्स बनवा लिया करता था। तो मैंने उनको पूछा एंड अप्रोच किया कि क्या आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए कोई मेथड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पेपल है मेरे पास, यू कैन यूज़ इट। तो मैंने उनसे अकाउंट वगैरह डिटेल मांगा, एंड जो हमारा क्लाइंट था उसको मैंने सारी डिटेल्स दे दी। एंड फिर मैंने कहा कि एक बार थंबनेल डिलीवर हो जाने देता हूँ, देन पेमेंट आप कर देना। तो वो बंदा मुझे सामने से फोर्स भी कर रहा था, बट एक चीज़ हो गई थी कि वहाँ पे मुझे जो ये परमिट वगैरह लेने में टाइम लगा एंड सोचने में, वो 24 आवर्स प्लस था। तो मैंने थंबनेल तो जैसे तैसे बना के डिलीवर कर दिया था, बट आफ्टर दैट मुझे वो पेमेंट भी नहीं मिला। एंड हालांकि उन्होंने ये वाला जो थंबनेल है वो यूज़ भी नहीं किया, लेकिन वही है कि मुझे पेमेंट भी नहीं मिला। एंड इसका मेरे पास प्रूफ भी है, लाइक मैं वो स्क्रीनशॉट तो शेयर नहीं करूँगा, बट एक फुल ट्यूटोरियल है मेरे पास। वो ट्यूटोरियल आई होप कि आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि उस ट्यूटोरियल पे अभी 70-80 व्यूज़ ही होंगे। सो आई एम री अपलोडिंग इट, एंड देख लो भाई, थोड़ा गंदा एडिट है, बट देख लेना, अपना इंट्रो वगैरह भी उस टाइम पे थोड़ा सा गंदा था, सो झेल लेना। एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे आपको वो वाला ओल्ड वीडियो दिख जाएगा जिसमें ये पूरा ट्यूटोरियल है। एंड हाँ, ये 3 दिसंबर को मैंने अपलोड करा था, तो देख सकते हो। Hola amigo, कैसे हो, ठीक हो? क्या चल रहा है ब्रो? मिलते हैं, चल tell me what's up? Alright, so today we are going to make a very easy thumbnail on Android. So first of all we have to open Pixel Lab, and then we have to select the image size and set it to YouTube thumbnail. Then we have to add a text, like we are adding a amount here like $5,000. Okay, so this is the text, and we have to go to fonts, click on fonts, and then we are using a font named Burbank Big Condensed. So you can get it on dafont.com. You will search it on Google and you will get it, dafont.com. So we have to change the color of the text and give it red, and then we have to go to the strokes option, then we have to enable it, and then we have to select white color, and then we have to give the strokes to 23. And like we have to just go to the shadows option, then we have to enable that, and then we have to select a little bit grayish option, and then we have to just fix the blur radius to 0 and offset X to 4 and offset Y to 6, and we are done now. Then we have to save the file as transparent image or PNG, and then we have to open our PSCC application. Then we have to add the text here. So first of all we have to import the text here. Okay, so now we have to capture a background. You can capture it, or we are using just a demo thumbnail, like a demo background image. So this is the image, and this is a shoe collection video, so we are using the image. You can capture it and bring it on the downest layer, and then we have to give a blur on the background. So we have to go to FX, then Gaussian blur, and then tick it.
Now this is good, but we have to adjust a little bit saturation, some sharpness, and we have to click on FX, then photo, and then HDR look. Now the background is ready to go. Now we have to fix the text. We have to just fit it like this, and we have to rotate it, and then we have to fix it over here. Then we just have to duplicate its layer, text layer, and then we have to give it linear dodge. We have to give the blend to linear dodge, and then go to FX, basics, and then Gaussian blur. And you can see, if you will down the layer of glow, you can see a glow, a little bit glow here. Now we have to add a character. So we have the character. We have to fix it like this, and now you can fix it like this. And yeah, we are done. Now we have to just go copy the duplicate the characters layer, and we have to give stroke to it, white color stroke. Then we have to give a linear dodge to it, then duplicate the same layer, and then go to FX, give a Gaussian blur, do the blur to full and 100, and adjust its opacity. You can see the difference now. And now we have to go to the first characters layer, then we have to adjust saturation, we have to adjust the curves. Okay, so this is good. And then we have to go to FX, photo, and HDR look. Then we have to adjust it properly. Okay, so this is looking good, and this is a basic thumbnail. We can use a arrow over here, but we are not using this just because this is looking so good, because there is only a text and it's looking like fine. So we have to add a empty layer over here. Then we have to draw like this, and go to AND option and fill and strokes. Then we have to go to fill, and then we have to select black color, and then tick, and then go to effect, Gaussian blur. Wait a second, you have to tap on a screen. You can tap anywhere on the screen, then go to effects, then give Gaussian blur. Now it will work. Okay, so follow the step 2 or more times, then adjust the opacity, then fix it. And now we are done. We have to save the file and open it to our Lightroom application. Okay, so now we have the thumbnail. If you want, you can enhance the quality by using Remini app or Photore.com. You can use any app or any website for photo enhancing, and you can enhance your photo before, or you can create it, use it after creating your thumbnail. You can use the Photore.com or Remini application. There are many websites and many websites or many applications to enhance your thumbnail or photos, so you can use them. I am not using them just because I am making a demo. So here's we have to color grade it on Lightroom. So first of all, we have to go to details, then set a amount of sharpness you want in your thumbnail. Then we can remove the noise, and we are doing it 3. We are keeping it 3. Then we have to go to effects and then adjust the texture, clarity, and DAs. It brings darkness to your thumbnails. Then we have to go to vignette, and then we have to adjust it like this. And okay, this is looking good. Then we have to go to colors option. Then we can adjust vibrance and saturation over there. So we are adjusting it. Every thumbnail is not same, so you can do it by your own. And then we have to go on color grading wheel, and then we are selecting the blue color here on the shadows, and on face we are using yellow, a little bit yellow color, yellow and orange tone. So now we have to come to the color
point and then we can adjust it. Here's the orange color is for skin and yellow color is our background, so we can adjust it properly. Then we can adjust the red one, and then now it's looking good. Yeah, it's looking good. So we have to go to finally light option, then we have to adjust the highlights, the shadows, the whites and the blacks. Okay, so this is looking great. Now if you want, you can use the curves option also, and yes, this is okay. Now if you want, you can use enhancer. I haven't used it, but you can use it for more detailings and more heavy textures or more clear textures on your thumbnails. You can see this is looking good. Like I have just added a text because of for the thumbnail, because we want to show the background, like there are many shoes in the background, so we had done nothing in the background. We can add a arrow over here. Here we can add a arrow, but we haven't. And this is a simple looking thumbnail you can also create easily in your Android smartphone. So yeah, that's all for today. Thank you for watching. I will meet you in the next video. Bye bye. ओके सो डैट वॉज फॉर टुडे, एंड ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं एंड आ भी चुके हैं ऐसे मास्टर क्लास के पॉडकास्ट आप चेकआउट कर सकते हो। इनके सारे एपिसोड्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।